Okay, hello everyone. This is Mispa from Khawateen Rozgar Services, and I welcome you all to the Job Seekers series by Khawateen Rozgar Services. The guest we have today on our podcast is working in one of the leading hotels in the country. We have Miss Sabeen Aslam with us today from Islamabad, who is working as the HR manager at Marriott Hotels. Sabeen, it's great to have you on our podcast today. Please kindly briefly introduce yourself. Thank you so much, Puspa. And I just want to say, I've been saying this before also. Firstly, I think what you've been doing is a wonderful thing. So thank you so much for providing females of Pakistan, especially some kind of a platform where they can, they can be hopeful about to get themselves a better maybe position, a better job, a chance to earn for their family. So excellent job done. My name is Sabeen Aslam Khan. I think briefly you have already introduced. I am a HR manager in Marriott Hotel Islamabad. I do have an extensive experience of more than 15 years in HR, especially in training and development also. And I have an experience of working for the education industry, working for the telecom industry. I have an experience of working in international market as well as in Pakistani hospitality industry. So yes, I'm actually looking for some really interesting questions, and I would try my level best to answer as interestingly as my experience allows me to. Okay, that's great. So सभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा हायरिंग जो है वो कौन से डिपार्टमेंट में होती है एंड उस स्पेसिफिक जो रेलेवेंट ह्यूमन रिसोर्स है क्या वो इजीली मिल जाता है या नहीं मिलता? Hospitality industry in Pakistan, I'm sure you would agree, is very immature. Yes. Because I just told you that I have worked in UAE also, और वहाँ की जो market है, like every nook and corner you would find a 5-star hotel. ठीक है ना? So यहाँ पर you already know hardly 3 hotels are here which are of international level. So हमारे मुल्क में the industry is very immature, plus the social norms and the religious perspective of people, the background and the way just people perceive this area कि जी यहाँ पे guest rooms हैं. So I think for females it's not appropriate. एक ये भी बड़ा reason है why we actually find it really challenging to maybe have some female workforce for our hotel. Departments, I think every department except for maybe finance, जो सबसे ज़्यादा department हमारा हमें चाहिए होता है, that is a food and beverage department. और उसके बाद second number पे जो है, that is a front office, because front office you already know, if you've been people who are checking in and checking out, these ladies and the girls and the boys who are just greeting them and checking them in or just enrolling them, उनका ये काम है. So these are the two departments which I personally have observed and experienced that we find it really challenging to find females for these two departments. राइट अच्छा वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि फूड एंड बेवरेज जो है उसमें ज़्यादा अच्छी होती है नेचुरली फीमेल्स हैं येट हमारे पास जो जॉब मार्केट में आ जाएं तो होटल्स में रेस्टोरेंट्स में सबसे कम फीमेल्स होती हैं. जैसे मैंने बताया ना इसका the basic reason, I mean you will find females, males, I mean every kind of workforce and manning in anywhere in the world, ठीक है ना? Yeah. But in Pakistan, it's specifically we have a problem or a challenge because यहाँ पर आपको पता है हमारे जो family system है. See, I'll just tell you some briefly about myself. I've got 4 brothers, mashallah. I'm the only daughter. ठीक है? I'm the only sister. So you can imagine कि जी बड़ा pamper किया गया है, and the guys and the brothers are usually very protective. लेकिन I'm glad that I have been brought up in a family जहाँ पे इस चीज को बुरा नहीं समझते कि go and explore yourself. आपकी worth क्या है, आपकी capabilities क्या, how far you can just fly, how far you can go. लेकिन हर फैमिली में लड़कियां इतनी अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेट नहीं होती. अब क्या है यहाँ पर हमारे पास जो मेरे पास भी इवन द फीमेल्स हु कम्स इन, मेरी कोशिश यही होती है आई वुड हायर देम. प्रॉब्लम इज ओ अच्छा आपको ये यूनिफॉर्म भी पहनना पड़ेगा, अच्छा ड्यूटी टाइमिंग्स ये वाले भी होंगे. सो थिंग्स आर सो डिफिकल्ट फॉर देम. एंड वंस दे अग्री बिकॉज दे पर्सनली वांट टू वर्क, लेकिन उसके बाद वो घर जाती हैं. नेक्स्ट आई रिसीव अ कॉल, जी मेरे फादर नहीं मान रहे, एंड इफ देयर इज अ हस्बैंड इज नॉट अग्रीइंग टू इट. सो यस, दिस इज वेरी चैलेंजिंग. बिल्कुल ये तो बात है एंड हमारे कल्चर को चेंज होते होते भी इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम. अब अभी थिंग्स आर गेटिंग बेटर, बट वो जैसे मैंने कहा अभी इट विल, हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है, इट विल टेक आई थिंक अनदर 5 or 6 or maybe 7 years, God knows how many years, but yes, things are progressing. Things are progressive. But look at yourself. You've got 14,000, you just said, on your database. So this is progress, isn't it?
but I hope I will find some really, really nice pool for my department or for my hospitality industry. बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल. अच्छा जी, so what are the top 3 skills that you recommend कि हर job seeker के पास होनी ही होनी चाहिए आजकल? अच्छा देखिए, for females or specifically, or are you just talking about No, in generally. general? Generally. अच्छा, in general, first thing is the attitude. Because there are things that you can inculcate, there are things that you can develop and produce or maybe educate through. ठीक है ना, आप कुछ चीजें हैं वो लर्निंग के थ्रू हो सकती हैं, विच इज अ स्किल सेट अगर आपका नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हैं थ्रू ट्रेनिंग, but attitude is something that comes from within. So एक तो first thing that is most important for every individual that is coming for an interview or who is seeking a job, they need to have a right attitude. और right attitude क्या होता है? It's not आपने yes man बन जाना है then you have to say yes to everything. No, we don't expect that. आपका अपना दिमाग काम करना चाहिए, but at least you should understand कि professionalism requires certain kind of expected behavior. अब ये आपने कहना है कि जी ये काम मैं करूंगा या करूंगी और ये मैं नहीं करूंगी, सो आप जो है वो आपके इट्स नॉट अ पिक एंड चूज थिंग. हर चीज के साथ एक पूरा एक पैकेज होता है ना. फॉर एग्जांपल, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू बिफोर, देयर आर पीपल हु डू नॉट एग्री वेयरिंग यूनिफॉर्म. अब यूनिफॉर्म के बगैर तो काम हो नहीं सकता. सो देयर आर पीपल हु डू नॉट एग्री वर्किंग इन शिफ्ट्स, रोस्टर बेस्ड ड्यूटी नहीं करना चाहते, गजेटेड हॉलीडेज पे दे वुड लाइक टू गो एंड स्टे विद देयर फैमिलीज. पर मैं यही बात करती हूँ कि जब आप कस्टमर सर्विस में या आप जब जॉब कर रहे होते हैं, वो जो एक मशहूर है ना, I mean, sounds little bad, but नौकर की तो नखरा की. The thing is, you need to show the attitude that yes, you're there to work, you're there to stay, and you consider it as a career. तो कुछ चीजें आपको देखनी होती हैं. Unfortunately, ये नहीं है. So one is the attitude. Number two is the people friendly personality. मैं specifically इस वक्त बात करूंगी wherever we are working and in case if we are having a guest interaction or a customer interaction, जहाँ पे आपने एक दूसरे से नहीं बात करनी, आपने आपका जो business है that is coming mainly from people जिनसे आपका रोजमर्रा interaction हो रहा है. So you need to have a kind of a personality that fits or befits that environment. हमने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जो इंतहाई सीरियस होंगे, दे आर वेरी इंट्रोवर्ट, दे आर द लीस्ट टॉकेटिव, और फिर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ये वाला काम करें, विच इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. नथिंग इज इम्पॉसिबल बट इट्स वेरी डिफिकल्ट इन लोगों को करना. और थर्ड आई वुड से कि आपका ज़ाहिर है आपका थोड़ा स्किल सेट या आपकी एजुकेशन इतनी होनी चाहिए दैट इफ यू आर वी आर जस्ट पुटिंग यू इन सम प्लेस, तो आप उसको अडेप्ट कर सकें. So आपने आप लोगों के पास काफी मेल्स फीमेल्स दोनों आते होंगे जॉब्स के लिए. So what is the gap that you have noticed कि आप लोग किस तरह के एम्प्लॉइज को देख रहे होते हैं एंड आप लोगों के पास फ्रेश जो ग्रेड्स आते हैं, what kind of skill set they are lacking currently? अब आपने ग्रेड्स बोल दिया, so because what happens is hospitality industry में, if I would say that 20% is the workforce that has to be like graduates or above graduates. ठीक है. ठीक है. बाकी जो आपका 70 to 80% workforce is the rank and file staff that mainly works in as a the service people. ठीक है. Right. So उसमें आपके किचन स्टाफ आ जाता है, उसमें आपका वेटर्स हैं, आपका सर्विस स्टाफ आ जाता है, उसमें आपके इंजीनियरिंग का स्टाफ आ जाता है, IT स्टाफ एंड ऑल दिस पीपल. सो मेनली हमारी जो वर्कफोर्स है दैट इज वी जस्ट मे बी FA मैक्सिमम FA. So then let's rephrase the question. ये हाँ जी, तो आप लोगों के पास जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टाफ आते हैं उनमें आप लोग किस किस्म की क्वालिटीज देखना चाहते हैं जो कि करंटली नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो चीज ये है कि right now people are so desperate to get a job that they do not do their homework first. ये भाई ये वाला जो काम है ये मुझे चाहिए, यानी what happens is आपने वो कहते हैं ना इनी मीनी मायना मो, आपने निशान लगाया, चलिए आज मैं इधर भी जाऊंगा इंटरव्यू देने, आज मैं उधर भी अप्लाई करूंगा, आज मैं इधर भी अप्लाई करूंगा. Irrespective of whether your skill set, your attitude, your personality goes with the job or not. ठीक है. आपकी एजुकेशन उतनी है कि नहीं है. अब हमारे पास मेजॉरिटी जो लोग आते हैं बात भी नहीं करनी आती है. I can give you an example because I was interviewing a guy, और अच्छा खासा वो लड़का था, उसको उर्दू ही नहीं आती थी. And I was looking at him, he had come from some really remote area. मतलब ना पंजाबी भी नहीं, वो कोई और ही लैंग्वेज थी. एंड आई वाज लिटरली, मतलब मुझे हंसी आ रही थी कि मैं इससे कम्युनिकेट साहब से कैसे करूँ. He had the right skill set. He had been coming for culinary department kitchen.
So kitchen में हमें basically the skills चाहिए होती हैं, ठीक है? If he had an experience, prior experience, it's okay. But problem कहाँ आती है कि he will not be able to communicate. So फिर जब ये ऐसे लोग होते हैं, जब वो चले जाते हैं, तो फिर वो क्या बाहर जाके बात करते हैं कि जी हमें नहीं रखा because you know they are looking for somebody with maybe जिनका कोई पीछे कोई बैकग्राउंड हो, कोई स्ट्रॉन्ग बैक होगी, कोई सपोर्ट होगी, सो हम लोगों को इस तरह से हम कंसिडर करेंगे, कोई एमएनए का नाम आ जाएगा, विच इज रॉन्ग. Unfortunately, हम लोगों को इस तरह का we have been conditioned, our minds have been conditioned since our childhood. We only look at मैं usually कहती हूँ, we consider devil and evil more than we consider good and God. मैं अक्सर बोलती हूँ, तो हम लोग जो है वो बुरी चीज को ज्यादा हाईलाइट करते हैं, हम ये नहीं देख रहे होते कि इसमें हमारा भी अंदर से कोई कंट्रीब्यूशन आ रहा है. तो एक तो ये है कि जो लोग आ रहे हैं, इवन ग्रेड्स की आप बात करेंगी, अब ग्रेजुएट्स का आई टेल यू, I don't know what teachers are teaching these days. I'm sure they mean well. The thing is, young people are coming to us and asking for, हम आपसे कहेंगे आपका सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अच्छी 50,000. My point exactly. You have no market value at the moment. Nobody knows that you exist. ठीक है? आपने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है अपने लिए, आप अच्छे आपके aspirations है, which is good. But the thing is, you have no idea about this industry. You have never worked before. Or scratch level पे you're expecting to have 50,000. So why would we give you 50,000? You see? जब आप उनसे क्वेश्चन करें, so they would reply back because जी मैंने इतना पढ़ाई पे पैसा खर्च किया है, because I want to move forward. Things like that. So I'm just saying that these people, they are very inexperienced and they do not know what are the right answers. And right answers mean, again वही वाली बात कि you are sincere about your career and the job that you are applying for. It's not कि जी अगर वो एक word होता है ना, तुक्का लग गया तो चलो I'll just land on a better position. You get it? Yeah. So इस तरह की जो चीजें हैं, some non-seriousness is something that bothers me. Right. So आपकी बात बिल्कुल सही है कि maybe उनके माइंड में हो कि we are going to Marriott for interview, तो सैलरी भी ऊपर बोलनी चाहिए. हालांकि this is a very wrong concept कि वो अपने skill sets को नहीं देखते, and they are just going for salaries, higher salaries की जो है वो उनको काफी उम्मीदें होती हैं. So even last podcast में मेरी जो है बात हो रही थी, so we were discussing the same कि candidates को चाहिए कि rather than going for a fixed salary, they can even tell a range to the interviewer. For example, if minimum they want, and maximum. yes, exactly. So maybe they can say I'm looking for something between 30 to 50,000. तो वो एक ज़्यादा it gives a better impression. Because it actually tells you that the person you're interviewing or interacting with is mature enough to realize कि जी वो इतने से इतने में ही fall कर सकता है. अगर जब when you just give an exact amount 50,000, so then your next question is how flexible are you, but then you have to ask, you have to dig in because you are experienced. So अगर मैं interview कर रही हूँ तो obviously I just need to find out कि ये इसका, is this the final answer or is this I mean if they are flexible enough. So the thing is कि लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि if you conduct some kind of a training program, do tell them कि जो interviewee है, that person is actually going to lose something. जो interview करने वाला है, that person does not have to lose anything. So if you want to be successful in your interview, you need to understand कि किस industry में आप जा रहे हैं. I'll tell you, I worked in telecom. If you have some idea, telecom pays you well. ठीक है? They spoil you to your very core. So when I was working there, I worked for about 8 years, and I was looking after Karachi, Lahore, and Islamabad, all three regions. मेरा pay package बहुत अच्छा था. I mean, I used to go, fly कर रही हूँ आज इधर कल उधर, things like that. उसके आपका increments बहुत अच्छे लगते हैं. There are so many other perks and benefits. But when I wanted to change my industry, that was my own decision. So I did my homework first. कि मैं जिस industry में जाना चाह रही हूँ, that hospitality industry, यहाँ के pay packages क्या होते हैं. I found out that hospitality industry doesn't pay you as much as any other industry. मैंने खुद से मुझे मालूम हो गया था because I did my research on it. So when I appeared for an interview, I actually guided them कि हाँ मुझे मालूम है कि आप इतना नहीं देते, but this is what my worth is. This is what I think. This comes from experience. I understand. But the thing is, if somebody is listening to this interview right now or this podcast, I'm sure they would just do some kind of pre-work before appearing for an interview, or before applying for any position, XYZ, any position.
आपने अपने आप को थोड़ा रीजनेबल रखना है इफ यू रियली वांट टू हैव अ जॉब. Right. So we discussed regarding this one specific question कि ये salary वाला जो है काफी लोग गलत करते हैं, right? They get it wrong. So what are other questions जो कि majority of the time आप लोग पूछते हैं और candidates उसका गलत answer देते हैं? अच्छा देखिए, फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्योंकि मैंने से पहले कहा दिस इंडस्ट्री इज मेनली सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस बेस्ड. Yeah. हम लोगों ने वी हैव टू सी द पर्सनालिटी मोर देन द स्किल सेट और द एजुकेशन, बी ऑनेस्ट. ठीक है. अगर किसी ने जियान से या स्विट्जरलैंड से कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ, दैट इज एन एडेड एडवांटेज एंड आई एम श्योर दैट वुड बी एडिंग वैल्यू टू आवर वर्कफोर्स. लेकिन आप उसको सर्विस इंडस्ट्री के लिए वो बहुत अच्छा है, बट कोर्स आप उसके हिसाब से ही उसको गेज करेंगे या ऑफर करेंगे. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द रैंक एंड फाइल स्टाफ, या आपका जो लॉबी में होस्ट्स होती हैं, होस्टेसेस होती हैं, आपके जो रेस्टोरेंट्स में वेटर्स हैं, होस्टेसेस हैं, आपके रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, इनके लिए आपको हम लोगों ने ज्यादा जो देखना होता है, वी गेज पर्सनैलिटी. ठीक है, हम लोग ये देख लेते हैं आपने एफए किया हुआ है, आपने बीए किया हुआ है, दिस इज गुड. अगर आपने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज किए हुए, एक्सीलेंट. लेकिन अगर नहीं किया हुआ, बट यू हैव एन एप्टीट्यूड एंड यू लव टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. Now, how many times have you seen people who are very interactive with strangers? I mean, I don't mind talking to anybody I do not know of. In fact, I feel more comfortable talking to strangers. लेकिन बात है कि हमारे यहाँ पर जो फीमेल्स हैं या मेल हैं, उन लोगों को, हम लोगों का वही वाली बात है, हमें आदत नहीं होती है कि हर एक से बात कर सके. कोई हमें ज्यादा देर देख ले तो लड़कियां वैसे ही अनईजी फील करने लगती है. अगर आप किसी से ज्यादा स्माइल देके बात करें तो मेल वुड ऑल्सो गेट रॉन्ग वाइब्स. सी, but this is how we've been conditioned in our society. So the thing is, hum log, what I see specifically in a person, if they are coming for a service industry, I always see for the personality. I always just look into it कि ये जो शख्स है इसमें patience कितना है, tolerance कितनी है, understanding कितनी है. You know, you need to be extremely compassionate towards others and their needs, because बहुत दफा ऐसा होता है कि guests are really really troublesome. And then you have to understand. जब आप लोग उनका इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग एफ एफएससी क्वालिफाइड भी होते हैं, कुछ मैट्रिक क्वालिफाइड भी होते होंगे, सो इनके लिए डज सीवी मैटर अ लॉट और डज द इंटरव्यू मैटर मोर? बोथ आई वुड से. सीवी इज समथिंग. अच्छा देखिए, एक चीज है कि पहले हमारे पास सीवी आता है, वी यूजुअली डू नॉट इंटरव्यू एनीबडी रैंडमली. somebody just popped up और उसका इंटरव्यू हमने कर लिया. ठीक है. So naturally we have to have some kind of a physical thing before we call the candidate. अब ये एक टिप है for everyone these days कि आप लोगों की फोटोग्राफ सीवी पे होना बहुत जरूरी है. That does not mean I'm not pretty at all. ठीक है. But at least you need to be presentable, and presentable doesn't have to be a beautiful. ठीक है. So आपको presentable होना चाहिए. You need to know कि आप जो, अब मैं आपको बताती हूँ, I worked in UAE. I was interviewed by Hotel One. Sorry, Hotel One and Only. ठीक है. It's on island. Yeah. वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था. So before interview, the manager HR, he called me up and he said, Sabeen, we would like to have your full picture and you have to be standing in that picture. I felt little, offended. I mean, I felt really कि ये क्या बात हुई भाई, मेरी तस्वीर मांग रहे, पूरी खड़ी है, कोई रिश्ता तो नहीं हो रहा. I mean, you get my point. Because this is how I had been conditioned. But मैंने उनको भेजा because service industry में, hospitality में, hotels में, we need to see कि एक शख्स जो है, जब आप उसको uniform, uniform has a certain requirements. Unfortunately आजकल body shaming और ये चीजें बहुत हो रही हैं, but uniform है. मैं बोलती हूँ PIA आपका जो आपका tourism है, आपका travel है, आपने कभी कोई बहुत ही out of shape खातून या साहब को देखा है जो air hostess या steward हो? Have you ever seen anybody? No. उसकी रीजन ये है कि हमें कहा जाता है कि आप फिट रहें so that you could serve better. Not because we hate your body. It's just that because you cannot get lethargic. अब हमारे पास अगर लोग आ रहे हैं, they want to be a hostess or they want to be a host, लेकिन वो है काफी ज्यादा unhealthy, I would call them. Healthy भी नहीं है, unhealthy है. So आप उनको यूनिफॉर्म में कैसे वो लगेंगे? You get my point. So the thing is कि हम लोगों ने कुछ चीजें इस तरह की हैं जो गाइड भी करते हैं थ्रू एन इंटरव्यू. सो जब आपके पास फोटोग्राफ आती है तो उससे आपको बहुत ज्यादा एक साहब का, एक साहिबा का मेंटल लेवल, उसका मैच्योरिटी, उसका बैकग्राउंड का आइडिया हो जाता है. बहुत सारी तस्वीरें आती हैं. अ गाय, देयर वाज दिस जेंटलमैन हु वाज वेयरिंग अ हुड.
he was wearing a hoodie and he Right. had a photograph on the CV. So Okay. these are the things that put you off. फिर आप उसको Hmm. देख के ही कहते हैं कि अच्छा इसको तो इतना भी समझ नहीं है कि प्रोफेशनल आपका जो सीवी है उस पे फोटोग्राफ कैसे हो जाए. Then there are so many people who do not have a photograph in the first place, but that's okay. फोन पे हम बात करते हैं. उनसे पूछा एक साहिबा मेरे पास आई एंड फॉर द फ्रंट लाइन पोजीशन, यू गेट इट, फ्रंट लाइन मींस दैट दे हैव टू इंटरेक्ट विद द गेस्ट. Yeah. That lady was around 50 years old. So we don't have an issue. She can be working maybe in some other department where I'm sure she can just work better. But her job की, her area की requirements होती हैं, and people do not understand those requirements. तो फिर यही है कि आप उनको, I mean, I just try कि female अगर आ रही है तो हम उनको कहीं ना कहीं adjust जरूर करें. So we would just see, you know, there are other places where we can just put them in. लेकिन अगर उनकी ख्वाहिश यही है कि हमें तो फ्रंट पे ही रहना है, so that becomes really. So interviews जो आपने लिए हैं, so what is, do you recall any best answers that you ever got from a candidate? Best answer. So Yeah. there was this, I wouldn't call it a best answer, but it Yeah. was something, I never hired that person. I'll Yeah. tell you by the way. ठीक है. But it was something that I usually tell everyone. It's been a time now. I received this individual who came for an interview and he had these headphones hanging in his ठीक है ना, उसके गर्दन में वो लगे हुए थे. He was wearing a shirt and very casually dressed. आके वो बड़े ढीले से अंदाज में, you know, he just lie down on the chair and I said, excuse me, can you please sit properly? खैर आराम से बैठ गया. And then he was just answering. I said, convince me, why would I be giving you a job? Do you think with this kind of an attitude, with this dressing and, you know, casual आपका जो attire है और जिस तरह से आप बैठे हुए headphones लगा के, you think I'll be giving you a job? तो उसने आगे से मुझे जवाब दिया, job नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, भूलेंगे नहीं. See, I mean, okay, fine. That was a smart answer, I would say. But if Yeah. I am, you know, hiring a guy for a Schlumberger, if I'm hiring a guy for a finance department or maybe for the sales department, I guess he would have been a really good fit. But if I am hiring somebody for the call center or for the telephone department or for the front office, I don't think this non-seriousness would go a long way. In fact, ये तो हमारे लिए liability बन सकता है, you know, जो इंटरव्यू के लिए इस तरह के नॉन सीरियस आंसर्स दे रहा है. सो आई एम जस्ट सेइंग कि कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं who are very smart but maybe not Yeah. meant for customer services. बाकी स्मार्ट आंसर्स यही है कि you just need to be honest. मुझे हर वो कोई भी आपका इंटरव्यू है, any individual who is honest with you and telling you exactly. For example, you know, you usually ask these questions. अच्छा जी, आप अपने बारे में, if there is any weak area that you would like to talk about. Usually what happens, people don't talk about their weak areas, and we all already know, including myself, nobody's perfect. You do have certain weaknesses. आपने weaknesses अपनी बतानी है, but yes, आप smart यही है कि आप वो चीजें बताएं जो which you think can be improved and developed with certain trainings and maybe, you know, with education. कोई पर्सनालिटी वाली अगर आप ये चीज बता रहे हैं तो वो थोड़ा सा मसला हो सकता है. But something that you think you can improve over a period of time, I'm sure you can talk about it very honestly. So honest जवाब अगर आप दे रहे हैं, so that would go a long way because this resonates. आपका जो आप मुझसे सही तरीके से बात करें तो connectivity automatically हो जाती है. Right. So I just want people to be honest. Right. So my next question is regarding the funniest answers that you got. Well, first wala was, I think, smart and funny as well. So any That other was fun. answers that you know that are really funny that you got during an interview? I had been interviewing a lot, but Yeah. lately, like फोन में थोड़े थोड़े आते थे इस तरह के लोग जो आपको अच्छे जवाब दे रहे हैं, स्मार्ट आंसर्स. पर here अभी हमारा मसला ये है कि, you know, the people who are coming in are for the very basic positions, unfortunately. So उनके जवाब इस तरह के funny, I don't think so. They are right. ठीक है. So do you have any other comments or suggestions for the job seekers? First thing which I was just thinking I should be telling to everyone, especially females, when you are applying for a job in any company, in any industry, please have an open mind. ये मत सोचें कि आप लड़की हैं. मैं अक्सर कहती हूँ, there is no genderism in professionalism. There is no gender concept. अगर आप प्रोफेशनली आना चाह रहे हैं किसी जगह पे, तो फिर आप ये सोचें कि आप लड़की नहीं हैं, आप एक प्रोफेशनल हैं. आई एम ऑल्सो अ फीमेल, but I have just, you know, tuned myself to
to this environment. This does not mean that you have to go beyond your boundaries. And nobody expects you to go beyond your boundaries. It's just that आपने अपने आप को ये देखना है कि आप इसमें करियर बना रही हैं. हमारे पास जो फीमेल्स, स्पेशली मैं फीमेल्स की बात कर लेती हूँ, फीमेल्स आती हैं, they have certain do's and don'ts list already compiled with them. So बजाय इसके कि हम उनसे पूछें, they have the do's and don'ts list. People might not know. मैं आपको बता देती हूँ, as per labor law, we cannot keep a female for more than after 10 p.m. at night. Okay. ठीक है, this is we believe in also and we practice it. I'm an example to it. So हमारे पास अगर कोई females आती है, but yes, we do have a shift that is for 1 p.m. In the afternoon also, that ends at 10 p.m. We do have the pick and drop facility also at Marriott Hotel Islamabad. But क्या होता है कि उनको डोर टू डोर सर्विस चाहिए. दिस इज द रिक्वायरमेंट, उनको मॉर्निंग शिफ्ट करनी है, उनको इवनिंग नहीं करनी, उनको आफ्टरनून शिफ्ट नहीं करनी, उनको जो है यूनिफॉर्म नहीं पहनना अगर वो बगैर यूनिफॉर्म के, उनको ये करना है. मतलब देयर आर सो मेनी डिमांड्स ऑलरेडी सेट अप बिफोर यू हैव इवन कंसिडर्ड देम फॉर द पोजीशन. सो मुझे सिर्फ ये कहना है कि अगर आप जॉब करना चाह रहे हैं, आइदर यू हैव योर ओन बिजनेस एंड यू बिकम अ मास्टर ऑफ योर ओन सेल्फ. ठीक है, अगर आप किसी और के लिए काम करना चाह रहे हैं, किसी कंपनी के लिए, सो प्लीज हैव एन ओपन माइंड इफ यू वांट टू गो इन द फर्दर. अगर आपने इसको करियर बनाना है तो ये सोचें कि लड़कों को क्यों लोग ज्यादा चांस देते हैं, बिकॉज उनकी इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती है. आपने काम करना है तो आपने काम करना है. बिसाइड्स लर्निंग आपकी हर चीज पे हो रही है. I've been a trainer myself. I mean, I'm a trainer basically, right? Right. मैंने ट्रेनिंग रात को 10 बजे भी करवाई है, 11 बजे भी करवाई है. So अगर आपको जरूरत होती है, because night shift staff cannot come in the morning, so you need to understand at times ऐसा होता है, but hardly कभी होगा. You need to show flexibility, and I'm not saying कि आप बिल्कुल ही कहें जी हर चीज आप बोलेंगे मैं कर लूंगी या मैं कर लूंगा. No, you need to have your own standards. You should never go beyond your standards. लेकिन अगर आपके standards इस तरह के which is colliding with the corporate world, then you have a problem, my friend. And there is a problem. So, Sabeen, how can we encourage more females to come in the sector of hospitality? देखिए, मैं बैठी हूँ हॉस्पिटैलिटी में, बड़ी सबसे बड़ी encouragement यही है. That's true. हॉस्पिटैलिटी जी. हाँ जी, मैंने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब लड़कियां इस तरह आगे आती हैं तो उनको देख देख के ही पीछे और लड़कियां भी आती हैं. So that is the perfect example. हाँ, परफेक्ट. ये मैं इसलिए बोल रही थी बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू बिफोर, मेरा जो फैमिली सेटअप है, I've got 4 brothers in my family and I'm the only sister. और लोग बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, खासतौर पे पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में. Initially when I just thought of working in a hotel, my own family thought of कि ये किस तरह से होगा, मतलब, but they gave me a chance and in fact I just told them कि let me do it, let me explore it. Now that I've explored it, I can tell you I have lived abroad all by myself. मैं अकेली वहाँ पे रह रही थी. Nobody was there with me. It's just that you need to prove your worth. You need to prove to others you can do it maturely. प्रोफेशनली आप कर सकते हैं. ठीक है. सो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि होटल इंडस्ट्री और कोई भी इंडस्ट्री उस वक्त तक अच्छी है जब तक आप अच्छे हैं. अगर आपने अपने लिए एक ऑब्जेक्टिविटी सेट की हुई, इफ यू हैव एन ऑब्जेक्टिव, अ गोल फॉर योरसेल्फ, आई एम श्योर यू वुड नेवर डिविएट फ्रॉम इट. लेकिन आपका गोल ही ऑफिस में आने का कुछ और मकसद के लिए, देन नोबडी कैन हेल्प यू आउट. होटल इंडस्ट्री बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है. हमारे होटल्स के अंदर, तमाम होटल्स में हर जगह पे आपके कैमरास भी लगे होते हैं. देयर इज अ सीसीटीवी रूम वेयर 24/7 पीपल आर ऑब्जर्विंग, मॉनिटरिंग. हमारी जो फीमेल्स हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा सेफ है. ऐसा कोई एनवायरनमेंट नहीं है जहाँ पे जैसे मैंने खुद बोला कि हम ऐसा फील हो कि आप अनसेफ हैं. सो ड्राइवर्स हैं, चाहे आपके किचन का स्टाफ है, योर सर्विस स्टाफ, everyone we work like one family. And I'm not just saying it because I'm giving an interview. I'm just saying it क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंस आपको ऐसे नहीं आता. सो अभी मेरे पास if somebody comes in for an interview, I tell them कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, that is one of the reasons you should be coming, because if I'm sitting here and I'm looking into your eyes and I'm telling you that everything is perfect here, then it is perfect here. So but वही वाली चीज है कि आप किस मकसद से आ रहे हैं, that depends. Summing it all up, what we discussed in the podcast today, it was regarding the attitude of the people, of the candidates
who come, it has to be really positive. Then we talked regarding the people friendly personality. This really does matter in the hospitality sector a lot. Then they should love talking to strangers, and I think ये उनको practice भी करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है ना strangers से बात भी नहीं करते, you know, they consider it really not good and all. लेकिन this should now be even taught in the colleges at college level as well, ताकि उनका तभी से confidence level build होना शुरू हो जाए. Then we talked regarding the personality, क्योंकि personality hospitality में सबसे ज़्यादा matter करती है, because you have to deal with the customers and all. That is something they have to work on it as well. Then we talked regarding the skill set, and that the job seekers need to do their homework first before coming for an interview, ताकि वो interview में अच्छे से जो उनको questions पूछे उनके answers दे सके. Not just because of that, Misbah. Sorry to cut you. Not because of that only. वो इसलिए homework करके आए, so they would know that do they really want to do this job or not. क्या ये industry उनके लिए है भी या नहीं, उनके अपने लिए भी है कि आप homework इसलिए करें so that you could understand कि आप जिसके लिए जा रहे हैं, apply करना चाह रहे हैं, वो आप उसके लिए feasible या suitable है वो आपके लिए या नहीं है. So true. क्योंकि इसमें वही आप वाली बात कि you know एक दिन आके कहते हैं कि okay they give the interview and all, and when they're selected the next day they are like हम ये job नहीं करना चाहते. So I think उनको आने से पहले अपने घर वालों से भी discuss करना चाहिए, उनको सारी details बतानी चाहिए, and then only then they should you know come for the interview and discuss further. So ये भी, and फिर हमने बात की कि लोग कुछ ये समझते हैं कि सिफारिश पे जॉब्स होती हैं, हालांकि they don't concentrate कि उनको क्या चीज़ improve करने की ज़रूरत है, and the reason why they are not getting the jobs. Then we discussed regarding the right answers to questions in interviews. Regarding हमने salary का भी discuss किया कि भाई किस तरह से they should be tackling that question. Then we discussed that CV में photograph होनी बहुत ज़रूरी है. So specifically hospitality sector के लिए, because उसमें जो है एक presentation that counts a lot. And lastly we talked regarding कि जो एक mindset है that should be open. And अब इस चीज़ की specifically need ज़्यादा है, क्योंकि it's you know हर चीज़ में advancement आ रही है, and we need to bring a change. So इसको थोड़ा सा हमें मिलके ये चीज़ करनी होगी, क्योंकि you know it's about time that we bring a change and move towards a more open mindset and a positive mindset as well. Open, positive and flexible, because right now we are going through a phase, the entire world, right? COVID-19 की वजह से. So now from tomorrow onwards we are expecting there would be some kind of a leverage in lockdown, and most probably the offices will be opening. Exactly. Up जो है ना, things are changing now. Previously in the past what was abnormal is going to be normal now. So अभी जो है वो अब जो normal पहले कभी हुआ करता था is no longer in question. ठीक है, वो practice में नहीं है. अब things will be really abnormal, and abnormal things would be normal now. So अब ये देख लें podcast and all these things. We had never worked from home before. We are doing it. So this entire market in Pakistan especially is emerging. ठीक है, वो change हो रही है. It's emerging and it's changing. Now we need a workforce which is flexible enough to work into different operations. As an HR person, I can tell you, we would not be hiring a person who is 5 feet tall but his ego is 6 feet tall. You get it? हमें ऐसा नहीं बंदा चाहिए जो कहे कि जी I've been hired for this position or this job and I cannot do the other one, because now we will be requiring a workforce which is multitasker or multitasking, and which is willing to work in different operations if it is needed. So thank you so much, Sabeen. You gave us some very, very useful insights regarding the hospitality sector, and I believe job seekers के लिए भी ये बहुत ज़्यादा useful होंगी, and they can prepare themselves accordingly if they are interested in the hospitality sector. They, you know, this podcast is going to be very, very useful for them. Yeah, so I hope so. And to tell them that the industry is really safe. They should be coming. ठीक है ना? They should be really happy. Okay, thank you so much, Misbah. It was great having you for the Job Seekers podcast. So bye-bye, Khuda Hafiz, and stay safe. Same to you. Thank you. Allah Hafiz.